indifference curve. Definitions. An indifference curve is a curve which show different combination of two commodities like X and Y, which give a consumer on equal level of satisfactions. Or an indifference curve shows different bundles of two goods like X and Y, amongst which a consumer remains indifferent because all such bundles yield a specific level. Schedules. First column show a bundles, second column show a commodity X, third column show a commodity Y, fourth column show a MRS, or fifth column show a level of satisfactions. Now we can draw a diagram. OX measured X 1, 2, 3, 4, 5. OY measured 10, 15, 20 and 25. When commodity X 1, then Y commodities draw a 20. Commodity X2 13, commodity X3 then 12, 4 10, commodity Y is 9. By joining these points, IC curve A, B, C, D, E. Explanations. According to this diagram, commodity X is measured on axis and Y commodity has been measured on Y. IC has been drawn by joining points A, B, C, D, E points, which is downward sloped and convex to the origins. Properties of indifference curve. Following properties are as under according to this diagram. Number 1 property, negative slope. OX and OY, negative slope. IC is always negative. Negative slope. Explanations. IC is negative slope, which means units of X goods are increasing, while units of Y goods diminishing. Number 2, no positive slope. Y1, Y2, X1, X2, A, B's. Explanations. In the above diagram, the point B is more preferable than point A because at point there are more units of both X and Y commodity. It is not indifference curve. Not parallel to axis. OX and OY. Y is constant, X1, X2, point A, point B, IC curve. Not parallel. IC does not parallel to axis. Explanations. In diagram, B combinations is better than A because at point B there are more units of X without losing. It shows difference in preference. So IC is not parallel to axis. Number 4, not vertical. Y1, Y2. Y1, Y2 increase, but X is not increase. X is constant. Not parallel. IC is not vertical. In this diagram, B combination is better than
because at point B there are more units of Y commodity without decreasing commodity X. It shows difference in preference, so it is not parallel to Y-axis, so it is not an indifference curve. Number 5, not touches to X and Y. X touch. A, IC, A. Touches to X. IC does not touch to X. Explanation. According to this diagrams, at point A, where IC touches the X, consumer is purchasing the units of X while the units of Y are 0. So a consumer is purchasing only one commodity. Diagram cannot represent an IC. Number 2, touches of Y. Explanations. According to this diagram, at point A where IC touches the axis, consumer is purchasing the unit of Y while unit of X are 0, so he is purchasing only one goods, so diagram cannot represent an IC. Not concave. IC, not concave. It is not concave to the oranges. Explanations. Also, concave shows the MR is increasing, which is against the theory of DMRS. Number 8, convex to the origins. OX on Y. IC, X1, X2, X3, Y3, Y2, Y1. Convex to the origin. NIC is always convex to the origin. Explanations. Its convexness shows that MR is decreasing, which means consumer wants to sacrifice less and less of Y good for an additional unit of X commodities. Not straight line. IC is not straight line. Y1, Y2, Y3, X1, X2, X3. IC is not straight line, not intersect. IC1, IC2. Not straight line. IC is not straight line. Explanations. Its straight lineness shows that MRS is same. That is also against to the law of DMRS. So IC is not a straight line. Not intersect. IC does not intersect each other. Explanations. IC1 and IC2 are two indifference curve and both intersect each other at point E. Then IC is not intersect to each other. खतूत अदम तरजीह का तसव्वुर पहली मरतबा 1881 में मुतारफ़ करवाया गया, जिसको मरहलावार
तब्दीलियों के बाद 1930 में प्रोफेसर हिग्स ने पाया तकमील तक पहुंचाया। इस नए नज़रिए का मकसद सारफ के तवाज़ुन के मसले को वाज़िया करना था। खतूत अदम तरजीह के नज़रिए का मकसद ये है कि एक सारफ अपने जहन में दो अशिया के लिए बेशुमार जोड़े रखता है जो इसे यकसा तस्कीन देते हैं। गोया खतूत अदम तरजीह के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए सारफ अपने तवाज़ुन दो अशिया के मजमूओं में बगैर तरजीह दिए इख्तियार कर सकता है। खतूत अदम तरजीह की तारीफ: दो अशिया के वो जोड़े जिनके दरमियान एक सारफ गैर जानबदार रहता है और खतूत अदम तरजीह पर वाक़या दोनों अशिया के तमाम जोड़े सारफ को यकसा तस्कीन देते हैं। खतूत अदम तरजीह का झुकाव मनफी: खतूत अदम तरजीह बाएँ से दाएँ ऊपर से नीचे को गिरते हैं। सारफ को एक्स शय की एक मज़ीद अकाई हासिल करने के लिए वाई शय की कुछ अकाइयों से दस्तबरदार होना पड़ता है, लेकिन सारफ की तस्कीन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा कि डायग्राम में ज़ाहिर है। पॉजिटिव स्लोप: खतूत अदम तरजीह का झुकाव मुस्बत नहीं होता। डायग्राम से सारफ से ज़ाहिर है कि सारफ जब एक्स शय की इकाइयाँ बढ़ा रहा है तो वाई शय की इकाइयाँ भी कम करने की बजाय बढ़ रही हैं। गोया सारफ का रवैया गैर जानबदार नहीं रहा और नुक्ता ए बी पर तस्कीन का मेयार मसलसल बढ़ रहा है, इसलिए ये खतूत अदम तरजीह नहीं है। अदम तरजीह उफ़क़ी शक्ल में भी नहीं होता। नॉट पैरेलल टू एक्सिस: डायग्राम में खींचे गए ख़त की शक्ल ख़त अदम तरजीह से मुताबिकत नहीं रखती, क्योंकि यहाँ भी सारफ एक्स शय की मज़ीद इकाइयाँ लेने के लिए वाई शय की कोई इकाई नहीं छोड़ रहा। गोया सारफ का रवैया गैर जानबदार नहीं रहा, इसलिए इसे नुक्ता बी पर ज़्यादा तस्कीन हासिल है। नॉट वर्टिकल: खतूत अदम तरजीह अमूदी शक्ल का भी नहीं होता। डायग्राम से ज़ाहिर है कि सारफ वाई शय की ज़्यादा इकाई लेने के लिए एक्स शय की कोई भी इकाई नहीं छोड़ रहा और ना ही नुक्ता ए बी पर सारफ की तस्कीन यकसा है। लिहाजा गोया ये खतूत अदम तरजीह नहीं है, क्योंकि सारफ दोनों अशिया की ख़रीदारी के दौरान गैर जानबदार नहीं है। टू द ओरिजिन: खतूत अदम तरजीह मबद्दा की तरफ महदब होते हैं। खतूत अदम तरजीह असूल तकलील मख्ततम शर अस्तबदाल के अतलाक़ के बाइस मबद्दा की तरफ महदब होते हैं, क्योंकि सारफ एक्स शय की मज़ीद इकाइयाँ लेने के लिए वाई शय की इकाइयाँ कम करता चला जाता है और सारफ की तस्कीन में भी कोई फ़र्क नहीं आता, जैसा कि डायग्राम से साफ ज़ाहिर है। केप टू द ओरिजिन: खतूत अदम तरजीह का मबद्दा की तरफ मुकर्रर होना। डायग्राम में दिखाए गए ख़त की शक्ल खतूत अदम तरजीह के ख़त की नफ़ी कर रही है, क्योंकि मुख्ततम शरह अस्तबदाल घटने की बजाय बढ़ रही है, जो कि नज़रिया अदम तरजीह के मतज़ाद है।